दोस्तों अभी हूँ मैं पुडुचेरी के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। इस जंगल के बीच में यहाँ एक लेक बनाई जा रही है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन इस काम को कर रही है। हमारे साथ संगीता मैम हैं, जो बताएंगी यहाँ पे क्या काम चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक कंप्लीट होगा और जेसीबी का इस काम में क्या रोल है। हेलो मैम, आपके पास जेसीबी की कितनी मशीनें हैं अभी? I have two machines. I purchased JCB in May जी for this project. ओके Where we are standing, it's Auroville. We call Auroville. ओके Here's Matra Mandir. It's by Mother and Shirbindo. ओके And we are working for a lake, the water body around Matra Mandir. ओके ओके So we did one sample pit there. It's 100-meter width and 10-meter depth. So we have an excavator. I have an excavator and backloader. ऑरोविल के बारे में हमें कुछ बताइए मैम। Auroville is international. In many people, they're living in one place with harmonious way. ओके ओके So we are doing the experimental and research on humanity. JCB, it is a well-known company for me. We purchased 15 years back, 2012 I think, we purchased one JCB for the road work for Auroville. So maintaining and our mechanic, everybody well-known people. So that's why I select this company. Okay. People have to live in peaceful manner without any fight or disharmony. We are all human, so we have to live together without any argument or demanding. दोस्तों संगीता मैम द्वारा और इनकी टीम द्वारा यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है और उतना ही अच्छा इनका मैसेज भी था कि हमको सबको प्यार से, भाईचारे से, बिना लड़ाई के साथ रहना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सफर पर और देखते हैं जेसीबी की कोई नई और दिलचस्प कहानी।